हरे कृष्णा, राधे राधे सब लोग। हैप्पी सैटरडे। हरे कृष्णा, राधे राधे प्रभु जी। धन्यवाद हरे प्रणाम प्रभु जी। रत्नवती गीता जी, हरे कृष्णा। हिमांशु आ गया आज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हिमांशु, मिस यू last week. We didn't see you last week. Yeah, I Riya missed आए थे। the last class. तो very nice, everybody is here. Good. तो हम लोग कीर्तन करेंगे थोड़ा। महाप्रभु के बारे में हम चर्चा हो रहे हैं आजकल। पिछले हफ्ते हम लोग किया था, तो मैं रिव्यू करूंगा और थोड़ा पढ़ेंगे महाप्रभु के बारे में। और आज थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्लास का, क्योंकि मेरा जानवी का अरंगेत्रम है, तो काफी बिजी है हम लोग। अभी मैंने एक क्लास पूरा करके ये क्लास में आ रहा हूँ। हमारा गीता क्लास होता है सुबह, तो हम लोग कीर्तन करेंगे, शुरू करेंगे। तो वैसे आप लोग आपके सब माला है, जप माला आपके पास माला होंगे, तो हम लोग थोड़ा एक माला, अगर माला नहीं है तो ऐसे हम 5 मिनट के लिए हम महामंत्र ऐसे उच्चारण करेंगे ध्यान में। और ध्यान में ऐसा है कि अपना हृदय के हड्डी सीधा करके सांस लेना, ब्रीथ नाइसली, एंड वी से हरे कृष्ण भगवान के ऊपर फोकस करेंगे। मैं टाइमर डालूंगा, टाइमर डाल करके 5 मिनट हम लोग ये करेंगे। फिर हम लोग कीर्तन करेंगे महाप्रभु का, फिर एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं टाइमर को 5 मिनट का लगा रहा हूँ। 5 minutes stop। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते नम योगेंद्र स्वामी नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकेतन प्रचारिणी विशेषा शून्यवादी समस्तेष्टरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी विशेषा शून्यवादी पश्चातेष्टरिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैता गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Ram Hare Hare Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Giridhara Siva Shri Gaura Bhakta Vrind Hare Krishna Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Giridhara Siva Shri Gaura Bhakta Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Giridhara Siva Shri Gaura Bhakta Vrinda. So welcome again. We have Samira who joined us. That's good. Let me share my screen. And let's see what we did from beginning. Let's see that. Okay. So just for a review, we are in our third semester and we are on the 15th chapter, which is about the hidden incarnation. Okay. So we talk about how Chaitanya Mahaprabhu last time, we talked about how Mahaprabhu is considered to be the hidden incarnation. And we also mentioned Srimad Bhagavatam, 7th canto, chapter 9, text 38. Any volunteer wants to read the shloka? I read the Sanskrit. Itam nitriyagga rishidevaha jashavatare lokan vibhava hamshi jagat pratipan dharman mahapurusha pashi yuganuvritam chanaha kalo yad abhavastri yugo atha satvam. Anybody volunteer who wants to read the translation for the verse? Hare Krishna Prabhuji, can I read? Yeah, please. In this way, my Lord, you appear in various incarnations as a human being, an animal, a great saint, a demigod, a fish, or a tortoise, thus maintaining the entire creation in different planetary systems and killing the demonic
principles according to the age. Oh my Lord, you protect the principles of the age. In the age of Kali, however, you do not assert yourself as the supreme personality of Godhead, and therefore you are known as Three Yuga, or the Lord who appears in three yugas. Yeah. So this word here in this verse, if you see the last sentence where it says Chanaha Kalo Yad Abhavas Three Yugas Tha Satwam. So this word Chana, you know this word Chana here? It means any idea? Anybody? Chana means what? Okay. So Chana actually means secret, the hidden incarnation. So these are specific attributes of Chaitanya Mahaprabhu. Very simply, we first of all is Mahaprabhu is considered to be a combination of Srimati Radharani and Shri Krishna. Okay, and when I was in Vrindavan once doing Vrindavan Parikrama, में वहाँ पे एक इमली ताला है. There's a place where actually after the Ras dance, Krishna Bhagwan sat down under the tree, and then his color changed into a golden Radharani को स्मरण करके, राधारानी को याद स्मरण करके उनका जो शरीर है वो गोल्डन कलर में बदल गया. तो फिर यही जो रूप धारण किया ये चैतन्य महाप्रभु का रूप है, स्वरूप है. So that's a combination of Radharani and Krishna. Mahaprabhu का जो अवतार हुए. So that's Krishna Bhagavan in Radharani's mood. Yeah, we can say like that. So always in separation, crying. That's why Mahaprabhu's golden avatar is there. So in Kali Yuga, he manifests as Chana. Chana means a secret avatar, a special hidden incarnation. So Mahaprabhu is a very special incarnation. It's considered to be very hidden. Chana means secret, and that is from the Srimad Bhagavatam, that sloka that we just read. We got this. Chana means secret. And the other important aspect or attributes of Mahaprabhu is that he displays his pastime in the guise of his own devotee. He never said that I'm God. He never say there's a Krishna say I'm God. But Mahaprabhu says came in this pastime. कैसे बता रहे कि अपने भक्ति सिखाने के लिए. So he came to teach us how to be a devotee, and he acted like a devotee. He displays pastime in the guise of his own devotee. And then we have Chaitanya Upanishad of the Atharvaved foretells the glories of Chaitanya Mahaprabhu. Even in the Shastra, in the Vedic literatures, in part of the Atharvaved, there's a Chaitanya Upanishad which talks about the glories of Chaitanya Mahaprabhu, how he will appear in this age of Kali. And we have different the scripture, the Mahabharata and the Srimad Bhagavatam as well, that predicts the glories of Chaitanya Mahaprabhu in the age of Kali. Like specifically, Krishna Yamal and Brahma Yamal, these two texts talks about Mahaprabhu's mother's name, his town of birth, his different aspect of his childhood, and everything is described in this two texts, as well as the mission that he came from. And what is the mission of Chaitanya Mahaprabhu? The mission of Chaitanya Mahaprabhu is to reclaim all the fallen souls of Kali Yuga back home to Godhead, to Goloka Vrindavan. And that mission is to propagate the Sankirtan movement, which focuses on the congregational chanting of the holy name of Krishna. So in this respect, let me chant this famous bhajan everybody knows. So I want to chant this in, just as last time we chanted a bhajan by Lochan Das Thakur. And this one is about Chaitanya Mahaprabhu. Daya Karo More. Let me see if I can get it and everybody can follow. You can follow this on the while I'm chanting. Last time I should have done that. So let me find the bhajan. Chaitanya
दया करो मोरे। Oh, यार। So you can sing together with me when we do this. So this bhajan, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Karo More, right? Puna Pratna Sang Savarana Shri Gora Pada Padme Pratna, and this is by Narottam Das Thakur. So it's here, so everybody can follow, right? I'll chant my style. So anybody has Midanga at home, they can join in the kirtan by playing kartal or Midanga. So Himanshu, you know how to play Midanga? Or anybody? No, Himanshu? Prabhuji. Or you have kartal, you can play kartal, you can play anything. I can accompany. Okay? Shri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Koro More Shri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Koro More Tuma bin ke dayalu Jagat samsare Tuma bina ke dayalu Jagat samsare Shri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Koro More Shri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Koro More Toma Bina Ke Dayalo Jagat Samsare Toma Bina के दयालो जगत संसारे पतित पावन हेतु तव अवतारो पतित पावन हेतु तव अवतारो मुसाम पतिता प्रभो न पैबे हारो मुसाम पतिता प्रभो न पैबे हारो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे आहा प्रभो नित्यानंदा प्रेमानंद सोखी आहा प्रभु नित्यानंदा प्रेमानंद सोखे कृपा बलोकाना कोरो आमी बड़ो दुखी कृपा बलोकाना कोरो आमी बड़ो दुखी दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई दया करो सीतापति
अद्वैत गोसाई तव कृपा बोले पाय चैतन्य निताय तव कृपा बोले पाय चैतन्य निताय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे तुम बिना के दयालो जगत संसारे तुम बिना के दयालो जगत संसारे गोरा प्रेमनाया तनु मंदित गधाधो गोरा प्रेम माया तनु पदिंत कोधाधोरो श्रीनिवास हरे दासा तोयार सागरो श्रीनिवास हरे दासा दयार सागर आहा स्वरूप सनातन रूपार घुनाथ आहा स्वरूप सनातन रूपार घुनाथ भटायुगा श्रीजीवा प्रभु लोकनाथो भटायुगा श्रीजीवा प्रभु लोकनाथो दया करो श्री अक्षया प्रभु श्रीनिवास दया करो श्री अक्षया प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संगे मांगे नरोत्तम दासो रामचंद्र संगे मांगे नरोत्तम दास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे तुम बिना के दयालो जगत संसारे तुम बिना के दयालो जगत संसारे जय निमानिताय 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 जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय निमानिताय जय निमानिताय जय निमानिता जय निमानिता निता गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल गौरंग 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 नित्यानंद नित्यानंद गौरंग गौरंग नित्यानंद नित्यानंद गौरंग गौरंग नित्यानंद 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 गौरंग हरि बोल. So this is one of my favorite bhajan. Actually, Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu Daya Karo More. Tuma bina ke dayalu jagat samsari.
the translation. We're going to read the translation by Srila Prabhupada. तो आपको अच्छा लगता है ये भजन? किस किस को अच्छा लगता है? हाथ खड़े हो जाए, हाथ खड़े करके. Oh, नित्य अच्छे लगते हैं. Very nice. Almost everybody. Kushi, you like this bhajan? You heard you've been singing this before? पहले आप गए कभी? Yeah, Prabhuji. This is my favorite bhajan. इस्कॉन टेम्पल में श्रृंगार आरती के टाइम में भी इस भजन को गाया जाता है. हाँ, मैं जब प्रभुपाद जी का जो गुरु पूजा के बाद में मैं हमेशा गाता हूँ. हमारे गुरुजी जब yeah, so I used to accompany Maharaj for Mayapur, in Mayapur, long time back. Somebody should unmute. I can hear everything that you guys talking, so please unmute. So be it. So when I used to go to Mayapur with Maharaj, and Maharaj will be in the morning, प्रभुपाद जी को लेकर के फिर जाते हैं, परिक्रमा करते हैं प्रभुपाद जी को लेकर के. जो भगवान है मायापुर में मंदिर, राधा माधव पूरा परिक्रमा करके फिर जब गुरु पूजा गाने के बाद महाराज खूब ये भजन गाते थे. श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु दया करो मोर तुमा भी न के दया जगत संसारी. तो अभी रीडिंग फ्रॉम प्रभुपाद जी का ट्रांसलेशन है. तो प्रभुपाद जी कहते हैं purport, this is a song composed by Narottam Das Thakur who prays to Lord Chaitanya. My dear Lord, please be merciful to me, because who can be more merciful than your lordship within these three worlds. इसलिए महाप्रभु जो है, आप लोग जब भोग लगाते तो बोलते हैं ना, ओम नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिताय च गदित्याय कृष्णाय गोविंदाय नमः. फिर दूसरा वाला नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदाय ते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामिने गौरश्चे नमः. तो यहाँ पे महावदन्याय means the most magnificent incarnation of the Lord. जो चैतन्य महाप्रभु बहुत दया में, अति दयालु, अति कृपालु. नमो महावदन्याय कृष्ण पदाय थे, एंड वो कृष्ण प्रेम पदाय थे, कृष्ण प्रेम को बांटने के लिए आए हुए हैं. और महाप्रभु नहीं देखते, जैसे हम पिछले बार बताए थे कि कृष्ण भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यजा माम एकम शरणम हम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुचः. पहले तुम समर्पित करो अपने आप को, फिर मैं तुम्हारे सारे पापों को मुक्त कर लूंगा. ये कृष्ण भगवान कहते हैं, लेकिन महाप्रभु ने कोई नहीं बताया कुछ भी. बोला आप फ्री ले लो, आइए भगवान का नाम लेकर के कृष्ण प्रेम प्राप्त कीजिए. फिर हम लोग बाद में दूसरा जो लचनदास ठाकुर का भजन है, कहते विषयचर्या श्रेयमया. विषयचर्या का मतलब है कि अपना जो संस्कारिफिकेशंस को छोड़ो, फिर आपको कृष्ण प्रेम मिलेंगे. तो इसलिए कहते हैं कि मोस्ट मर्सीफुल इनकार्नेशन, जो सबसे बड़ा दया में कृपा में है, महाप्रभु का अवतार हुए. Actually, this is a fact. Not only Narottam Das Thakur, but Rup Goswami also prayed to Lord Chaitanya Mahaprabhu in this way. तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम लोग रूपानुगा है, हम रूप गोस्वामी को फॉलो करते हैं. तो रूप गोस्वामी भी प्रार्थना करते हैं महाप्रभु से इस मूड में, और हम लोग भी करना चाहिए. हे महाप्रभु दया करो हमें, हम लोगों के ऊपर दया कीजिए. ये ऐसे प्रार्थना करना चाहिए हम लोगों को. My dear Lord, you are the most munificent of all incarnation, because you are distributing love of God, Krishna consciousness. क्यों? क्योंकि कृष्ण प्रेम को बांट रहे, इसलिए आप सबसे बड़ा मैग्निफिसेंट, दयामय, वदनीय of incarnation. When Krishna was personally present, he simply asked us to surrender, but he did not distribute himself so easily. भगवान को बोला कि क्या समर्पित को, लेकिन आसानी अपने आप को बांटा नहीं. He made conditions. First of all, you surrender. But this incarnation, Lord Chaitanya Mahaprabhu, although Krishna himself make no such condition, he simply distributes. Take love of Krishna. Therefore, Lord Chaitanya Mahaprabhu is approved as the most munificent incarnation. Narottam Das Thakur says, please be merciful to me. You are so magnanimous because you have seen the fallen souls of this age, and you're very much compassionate to them. But you should know,
also that I am the most fallen. तो ऐसा है ना, जब भगवान के सामने जाते हैं, अगर आप सोचते हैं हाँ मैं भगवान के सामने मैं कुछ हूँ, मैं इतना हूं, मैं इतना प्राप्त किया, मैं इतना भक्ति किया, इतना माला जप किया, मैं कुछ हूं, तो आप भगवान के सामने जाकर के तो कृपा नहीं मिलने वाला। अगर आप बहुत विनम्रता से जाते हैं भगवान के सामने, प्रभु मैं तो बहुत पतित हूं, मेरा जन्म ठीक नहीं है, मैं बहुत त्रुटियों से परे हूं, तो आप एक भिखारी के साथ जाते हैं, प्रभु मैं भीख मांग रहा हूं, आपका कृपा का भीख मांग रहा हूं। अगर ऐसे भगवान के सामने आप अप्रोच करेंगे, देन यू विल गेट मर्सी। So when we approach God, we have to approach in a very humble way. So यहाँ पे ये बहुत नरोत्तम दास को ये भी कह रहे हैं, इस मूड में कह रहे हैं, किस मूड में हम भगवान को अप्रोच करना चाहिए, भगवान का सेवा किस मूड में हमको अप्रोच करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत विनम्रता से अपने आप को सोचना है, क्योंकि हम संसार में जब रहते हैं ना, अपने आप के बारे में बहुत सोचते हैं, लेकिन भगवान के सामने जब जाते हैं तो अपने आप के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ताला Please be merciful unto me. You are so magnanimous because you have seen the fallen souls of this age and you're very compassionate to them. You should know also that I am most fallen. तो अपने आप को बहुत fallen समझना चाहिए. So when you pray to God, when you pray to Krishna, you have to pray in that mood that, oh my Lord, I am the most fallen person. No one is more greatly fallen than me. Now you can ask me this question. अभी अगर ये emotion नहीं आ रहे हैं, तो हम झूठे झूठे इमोशन भगवान को तो कैसे पेश करेंगे, तो गलत होगा। तो इसलिए शुरुआत करना चाहिए, ठीक है, अगर हम जेन्युइनली हम्बलनेस फील नहीं कर रहे हैं तो प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु मैं इतना फॉलन हूं, इतना गिरा व्यक्ति हूं कि अपने आप अंदर विनम्रता है ही नहीं। तो ये भी एक प्रार्थना है। So that's also a prayer. Like I am not feeling that, I don't have the appropriate feelings for you, Krishna. I don't have the appropriate sincere feelings for you, Krishna. वो sincere feeling नहीं आ रहा है, इसका मतलब है हे प्रभु ये कुछ गलती, हमारे हृदय में कुछ कमियां हैं, हमारा हृदय में दोष है, इसीलिए sincere feeling नहीं आ रहा है। तो ये पॉइंट है कि ये हमको लोग को समझना है, ये बात को यार यहाँ पे बता रहे हैं, पतित पावन हेतु तव अवतार, no one is more greatly fallen than me, पतित पावन हेतु तव अवतार, your incarnation is just to reclaim the conditioned fallen souls, but I assure you that you will not find a greater fallen soul than me, therefore my claim is first। तो यही बता रहे हैं कि हे प्रभु तुम बिना के दया जगत संसारे, इस संसार में आप सबसे बड़ा दयामय है, लेकिन पतित पावन हेतु तव अवतार, मोसामा पतिता प्रभु न पैबे आर, आप तो पतित पावन है, लेकिन ऐसा पतित जीव जैसे मेरा है आप इस संसार में कहीं नहीं मिलेंगे आपको। तो ये मूड अपना जो अब हम पेश करते हैं अब भगवान के सामने, तो ये मूड रहना चाहिए। Then he prays to Lord Nityananda. He says, Aha Prabhu Nityananda Premananda Sukhe, Aha Prabhu Nityananda Premananda Sukhe, Kripa Balo Kana Koro Ami Boro Dukhe, Kripa Balo Kana Koro Ami Boro Dukhe. Then he prays to Lord Nityananda. He says, my dear Lord Nityananda, you are always joyful in spiritual bliss. Since you always appear very happy, I have come to you because I am most unhappy. If you kindly put your glance over me, I may also become happy. तो हम लोग दुख क्यों है, हम दुखे क्यों हैं, हम हैप्पीनेस फील क्यों नहीं करते? चलो हम प्रयास करें, देखते हैं why we don't feel that happiness in our heart. Who can try? Any volunteer who wants to try this question? Why we don't feel that happiness in our heart? Samira, why we don't feel happy sometimes? Maybe we feel happy sometimes, or when we feel happy, but what we don't have that happiness like Nityananda Prabhu. Prabhuji, like the question is, why don't we feel happy about like when we spiritually happy or like? Yeah, so when we talk about Nityananda Prabhu, we are talking about spiritual happiness, right? We don't
We feel okay. Suppose I am hungry and I eat one ice cream, okay, two ice cream, three ice creams, and I feel happy. But how many after eating the 10th ice cream, then I won't be happy because that would be causing me trouble, right? Yes, Prabhuji. So it means that in the material world, material happiness follows a diminishing law of diminishing returns. Like in economics, we learn that law of diminishing returns means as you consume something, the ability to enjoy it decreases. But in spirituality, when we talk about spiritual bliss, it's ever increasing. The more you taste the holy name, the more you taste prasad, you want to eat more and more, and you feel the bliss more and more and more. So the question is, um, here the mood is, Narottam Thakur is saying, Narottam Das Thakur is saying, oh, I am most unhappy, and you have come and have come to you, and praying to Nityananda Prabhu, he says, please show me some mercy that I can be happy like you. So why we are not joyful in spiritual bliss? Why we are not feeling that happiness in spiritually? Prabhuji, maybe because we are not in the purest mood. Somewhere or the else, we still have those ignorance in us, those qualities that push us back from that spiritual happiness. So we like more we improve ourselves, more we do the kirtan, more we hear, then there will be a time that we will really feel very happy. Yeah, good. So point is, say our source of happiness has been the material world, right? When we cry, when a baby cries, you get milk, and then she's happy, she's not crying. And if you get something, when you go bigger, if you want something that parents give you, then you're happy. And when you don't get it, you're not happy. So our source of happiness was always the material world. But we don't have a taste for spiritual world, the taste of happiness in the spiritual world. We don't have that. We have it a little bit. That's like when we go to the temple or we do some prayers and then we feel happy, right? We feel joyful. So the point is, the more why we don't feel that spiritual happiness is because lack of exposure as well to that particular happiness. The first thing is that we are not exposed to that joyful spiritual happiness as much as we should be, right? Just like in the beginning, when we go to Mangalati, it's hard to wake up early in the morning and then to go to the temple. But as soon as we reach the temple, when we see the deities, we feel happy. And when everybody is dancing in the kirtan, we are so happy. That's why we dance. Or that's why we would dance, because we feel happiness. So when we get the association of devotees, when we're exposed to that type of spiritual happiness, association of that type of people who has the church, that type of happiness, तो हम लोग भी feel करते हैं, बहुत joyfully feel करते हैं. तो हम लोग feel इस जब तक हम उसको पहचानेंगे, जब सब associate नहीं करेंगे, तो हम कैसे उस happiness के बारे में बातचीत भी कर सके? मुश्किल होगा. So that's why we're not exposed to that type of happiness. This is the first thing. Second thing is, the other thing that prevents us from getting this joyful happiness is anarthas. Because in our heart, we have kam, krodh, moh, lobh, ahankar, right? Lust, right? Greed, jealousy, uh, false ego, anger, all these different type of things are in our heart, and these things also prevent us from attaining that joyful state of happiness, of spiritual bliss. So यहाँ पे इसलिए नरोत्तम दास को मैंने please show some mercy. Aha, Prabhu, Nitana Premananda Sukhi Kripa, Balokarana Karu Amibaro Duke. I'm very, very sad. I don't feel that happiness. Please glance your mercy. Please bestow your mercy unto me. And that's the pratna, the prayer, ye pratna kar rahe hain Narottam Das Thakur. Then the next shloka, Daya karo Sitapati Advaita Gosai Taba Kripa Bale Pai Chaitanya Nitai. तो ये याद रखना कि अगर ये एक जगह है जब आप मायापुर परिक्रमा में महाराज के साथ नवद्वीप परिक्रमा किए थे बहुत साल पहले 92 में 92 में या 94 में 92 में परिक्रमा किए थे 91 92 30 साल पहले. तो
जब परिक्रमा किए तो हम अलग अलग जगह जाते हैं। नवद्वीप में 9 आइलैंड्स है, अलग अलग आइलैंड्स में जाते हैं। तो वहां पे एक जगह है शांतिपुर, जो अद्वैताचार्य की जगह है शांतिपुर। और शांतिपुर में अद्वैताचार्य का मंदिर है, अभी तक है। और वहां उनके माला भी है, मैंने देखा उनके जप माला उनका मंदिर में, मुझे अभी तक याद है। और वहां भक्त पूरा प्रसाद बनाते हैं, खिलाते हैं। वहां पे आम का बगीचा है पूरा। और जब फेस्टिवल में वो खूब खिलाते हैं। वहाँ पानी हाथी फेस्टिवल वहीं करते हैं, पानी हाथी फेस्टिवल भी करते हैं। और वहाँ पे गंगा कट्टत है पास, तो वहाँ पे अद्वैताचार्य बहुत प्रार्थना करते थे। क्या प्रार्थना करते थे? दया करो सीतापति अद्वैता गोसाई। तो अद्वैता जो सीतापति, सीता अद्वैता प्रभु's wife was Sita. Sita. So Sitapati is addressed as Advaita Gosai. So, dear Advaita Prabhu, you are so kind. Please be, if you are kind to me, naturally, Lord Chaitanya will be kind to me. तो अद्वैता महाप्रभु के कृपा से चैतन्य महाप्रभु आए। अद्वैत प्रभु अद्वैताचार्य प्रार्थना कर रहे थे, हे प्रभु इस कलयुग में आप आइए, अभी आपका आना चाहिए, आपको अपना लीला प्रचार करने के लिए भगवान का नाम, क्योंकि बहुत मायावादी फिलोसॉफी और इम्पर्सनलिस्ट फिलोसॉफी था उस समय। तो महाप्रभु अद्वैताचार्य प्रार्थना करते थे, और खास उनके पास एक शालिग्राम था। और जब शांतिपुर हम गए थे तो वहां पे वो शालिग्राम भी है अभी तक। तो रोज शालिग्राम का पूजा करके तुलसी दल और गंगा पानी ला करके पूजा करते थे और प्रार्थना करते थे, हे प्रभु आप अवतार कब होंगे, आप आना। तो उनके बहुत हृदय से सिंसियरली प्रार्थना करते थे कि महाप्रभु के आने के लिए इंतजार करते थे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ट्रांसलेट करते हैं। Actually, Advaita Prabhu invited Lord Chaitanya Mahaprabhu to come down. When Advaita Prabhu saw that the fallen souls were all engaged simply in sense gratificatory processes, not understanding Krishna consciousness, he felt very much compassionate toward the fallen souls. And he also felt himself incapable of claiming them all. तो देखो जो भक्त होते हैं वो बहुत दया है, उनका हृदय में बहुत दया है इनमें। वो देख रहे हैं कि ये सब जीव आत्मा, वो जब पति जीव आत्मा वो इंद्र दिग्नि में फंसे हुए हैं और उनके उद्धार नहीं कर पा रहे हैं, तो अद्वैताचार्य ने क्या किया, महाप्रभु को प्रार्थना करके बुला रहे, आप प्लीज आए, आप प्लीज आए। He felt very much compassionate toward the fallen souls, and he also felt himself incapable of claiming them all. और वो अपने इतना वो महसूस करते, कमी महसूस करे कि मैं उन सबका उद्धार नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसलिए वो बहुत प्रार्थना करते थे महाप्रभु को आने के लिए। He therefore prayed to Lord Krishna, please come yourself. Without your personal presence, it is not possible to deliver these fallen souls. कि आप स्वयं अवश्य आइए, क्योंकि आपके बिना ये जितने जीव आत्मा है उसका उद्धार नहीं हो पाएंगे। Thus, by his invitation, Lord Chaitanya Mahaprabhu appeared. Naturally, Narottam Das Thakur prays to Advaita Prabhu, if you will be kind to me, naturally Lord Chaitanya Nityananda Prabhu will be also kind to me. So naturally, अगर हम अगर कृपा, देखो वैष्णव में यही सीखते हैं कि वैष्णव का कृपा होना चाहिए। अगर वैष्णव का कृपा नहीं होंगे तो हम हमारा उद्धार नहीं हो सकते। तो यहाँ पे नरोत्तम अद्वैताचार्य का कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि ताकि वो महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु प्लीज हो जाए, उनके ऊपर प्रसन्न हो जाए। Then he prays to the Goswamis. कौन सा? स्वरूप धाम, स्वरूप सन गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी, ये 7 गोस्वामी है वृंदावन का। तो आहा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट्ट युग श्री जीव आहा प्रभु लोकनाथ। तो he prays to the 7 Goswamis, refers to Sarup Damodar, the personal secretary of Chaitanya Mahaprabhu का personal secretary था Sarup Damodar. So Sarup Damodar, the personal secretary of Chaitanya Mahaprabhu, he always prayed to Chaitanya Mahaprabhu and immediate arrange for whatever Mahaprabhu wanted. जो पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं वो इमीडिएट बहुत क्लोज होते हैं महाप्रभु का, और वो सब जितने भी जरूरी होते थे वो अरेंज करते थे। देन the 2 attendants, personal attendants, महाप्रभु का जो 2 personal attendants है, स्वरूप दामोदर and गोविंद,
ये पर्सनली अटेंड करते थे, कभी मालिश करते थे महाप्रभु का, पर्सनली अटेंड टू डीड्स, कपड़ा धोना, ये सब खास होते हैं, ये सब चीजें देखते हैं, उनके बेड को सजाना, कैसे भगवान को सेवा करना है, ऐसे पर्सनली सेवा करें, पर्सनल अटेंडेंस, वी आर ऑलवेज constantly with Mahaprabhu. Therefore, Narottam Das Thakur also prays to Sarup Damodar, and then the 6 Goswamis, the next disciples of Lord Chaitanya, Shri Rup Goswami, Sanatan Goswami, Shri Bhatta Raghunatha Goswami, Gopal Bhatt Goswami, Jeev Goswami, and Raghunath Das Goswami. These 6 Goswamis were directly instructed by Lord Chaitanya to spread this movement of Krishna consciousness. Narottam Das Thakur also prays for their mercy. तो ये जो कृष्णा भावना अमृत संग उनका जो प्रचार हुए, तो इन 7 गोस्वामी, जो 6 गोस्वामी हुए, उनके द्वारा हुए. After this 6 Goswami, the next Acharya was Srinivas Acharya. Actually, Narottam Das Thakur was in the disciplic succession after Srinivas Acharya and was almost his contemporary. And Narottam Das Thakur's personal friend was Ramananda Chakravarti. Therefore, he prays, I always desire the company of Ramachandra. So you can see here the disciple जो होते हैं, जो devotees होते हैं, वो हमेशा devotee का association ढूंढते रहते हैं. The whole process is that we should always pray for the mercy of the superior acharyas and keep company with pure devotees. Then it will be easier for us to advance in Krishna consciousness. तो हम लोग भक्ति में आगे कैसे बढ़ सकते हैं? The whole process is we should always pray for the mercy of the superior acharyas and keep company with these pure devotees. तो मैं आपसे आप लोगों से ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि हम भक्ति में आगे यहाँ पे कौन सा बात इंपॉर्टेंट बात हुआ, ये नोट कीजिए. 2 points that we have to note. Can somebody reiterate? Can somebody say these 2 things that are important for our bhakti? Anybody? Yes, Kushi. Yes, Kushi. 2 important पॉइंट बताए गए यहाँ पे कि कैसे अपना भक्ति को बढ़ाने के लिए. एक आचार्य जो प्रीवियस आचार्य उनका कृपा प्राप्त करना, और दूसरा क्या है? प्रभु जी मैं ओके. Prabhu ji, the second one is to keep the company of the pure devotees, to have association of devotees. हाँ, शुद्ध भक्त, जहाँ पे शुद्ध भक्त जैसे आते हैं, अगर मंदिर में कोई सुने के कोई प्योर सन्यासी आए हुए हैं, कोई प्योर डिवोटी आए हैं, उनका संग लेना चाहिए. उनके संग लेने से क्या होता है? महाप्रभु के चैतन्य चरित्र में लिखा है, साधु संग सर्व शास्त्र लव मात्रा साधु संग सर्व सिद्धि हो. एक moment association of a pure devotee can brings the culmination of all siddhis, all perfections, it says in English. To perfect ho jayega aapka bhakti. Then it will be easier for us to advance in Krishna consciousness and receive the mercy of Lord Chaitanya and Krishna. This is the sum and substance of this song sung by Narottam Das Thakur. This is one of my favorite bhajan, and इसमें 2 लाइन हम जो गाते नहीं है अपना मंदिर में, थोड़ा ये सिंपल है. एक जो एक्स्ट्रा हम लोग ऐड किया यहाँ पे ओरिजिनली, ये गोरा प्रेमानंद तनु पंडित गदाधर श्रीवास हरिदास दयारा सागर. This is one extra line that we sing usually. Usually in our temple when we sing, we don't sing that part. We don't have that part. So that was there. And let me go back to my. Today will be having short class. I'll take a few questions, and let me go back to my PowerPoint. We were here. So we were here. So we talk about the main aspects of Chaitanya Mahaprabhu as an introduction. Then Mahaprabhu's life. We can understand that Chaitanya Mahaprabhu was born on February. Appeared on 18 February 1486. And if you read from teachings of Lord Chaitanya, Srila Prabhupada gave the exact
period. And I'm reading from Chaitanya, Teachings of Lord Chaitanya. It says that, one second, let me connect. My laptop is going to die. 1 second, let me connect the laptop. Okay. So प्रभुपाद जी कहते हैं, क्या कहते हैं, महाप्रभु मायापुर में अपीयर हुए थे, Nadia, more specifically Nadia, in the town of Nadia, and after sunset, just after sunset on the evening of the 23rd Falgun of 1407 Shakabda. This is different time calculation, but in the earth, in our normal calculation of time is 18 February 1486 in the Christian era. This is a Christian era time is 1486, but in our in the Navadip, in the Gora Sampradaya time is Falgun, 23rd Falgun 1407. And the moon was eclipsed at that time. There was a big eclipse. The moon was eclipsed at the time of his birth. And the people of Nadia were engaged in chanting at that time, waving in the Bhagirathi, and they were chanting Haribol, Haribol. So even the appearance of the Lord pushed people to chant Haribol, call out on God's name, Krishna's name during his appearance. And it's mentioned that poetically, it's mentioned that the moon was too shy to be in front of the Lord when he appeared. That's why the moon was trying to hide his face. This is a poetic way of explaining the eclipse. That's why when the eclipse, and more that people were chanting Haribol, that's more important. And his father, Jagannath Mishra, we say his whole family, it's a Brahminical family, and his mother was Sachimata, and we descended from Brahmanas from Sylhet. Sylhet is a place in Bengal. And Mahaprabhu was very beautiful, and all the ladies on the town will come, just like when Krishna came there, all ladies will come in the town and see Krishna. Same with Mahaprabhu. Everybody will come and give presents to the tofa लाएंगे सब लोग Mahaprabhu के लिए. And actually जो सची माता उनके नाना, महाप्रभु के नाना जी, जो पंडित नीलांबर चक्रवर्ती, वो बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष थे. और ऐसे जब महाप्रभु आए, वो ऐसे भविष्यवाणी किए कि जो लड़का है, जो चाइल्ड वुड बी ए ग्रेट पर्सनालिटी, ये बहुत बड़ा पर्सनालिटी बनेगा, और उनका नाम देना चाहिए. जब नामकरण किया, उसका नाम दिए हुए विश्वाम्भर, तो पूरा विश्व में उसका पूरा नाम होंगे. तो and then everybody in the neighborhood was so happy to hear, and the lady of the neighborhood, they because he was so beautiful, they call him Gorahari, Goranga, the golden complexion. And उनके माँ सची माता ने उनका नाम प्यारे से, हम घर में अपने प्यार से पुकारते हैं, एक घर का नाम होते हैं, वैसे महाप्रभु का घर का नाम किसी को पता है कि महाप्रभु का घर का नाम क्या था? निमाई. या निमाई. सो महाप्रभु का घर का नाम था निमाई, क्योंकि वो एक नीम वृक्ष के, अभी आप जाएंगे मायापुर में, वो जगह अभी तक है, वो जगह जहाँ पे महाप्रभु प्रकट हुए थे, और वो ट्री उनके अभी तक है, एक छोटा सा, वो उसी फैमिली का ट्री है, नीम ट्री जो है. तो नीम ट्री के नीचे प्रकट हुए थे, इसलिए उनका नाम हुआ निमाई. और ऐसा है कि वैसे कृष्ण भगवान नटखट थे, वो भी बचपन में बहुत नटखट थे महाप्रभु. एंड उनके 5वां साल जो हुआ, वो एक पाठशाला में एडमिटेड हुआ, जहाँ पे संस्कृत वो सीखने गए, बंगाली भाषा में भी, और संस्कृत 5 साल में वो शुरू किया था, आरंभ हो गए थे उनका जो पढ़ाई, निमाई पंडित. तो ये बेसिकली हम लोग अगले बार हम लोग और डिटेल्स में जाएंगे
महाप्रभु का थोड़ा बचपन का जो 2-3 लीलाएं बताएंगे. And I'll suggest that if anybody next week मैं तो कुछ बोलूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग भी प्रयास कीजिए एक पास टाइम, सब लोग एक पास टाइम महाप्रभु का बचपन वाला childhood पास टाइम. So for next week, if you can, anyone who wants to volunteer to tell a story, a childhood pastimes of Mahaprabhu for next week. So Samara, you can just tell a story about Chaitanya Mahaprabhu. Ria, anybody, Kushi, Imanshu, you guys can just try to tell a story. It should be a childhood story. There are so many stories of Mahaprabhu, but we want childhood because next week we're going to talk about the childhood of Chaitanya Mahaprabhu. So everybody can get like 3 minutes or 3 minutes to tell a story about Chaitanya Mahaprabhu's pastime. So we have, just like Krishna has different pastimes of like eating dirt, Mahaprabhu also has similar pastimes. So this is one example. I'll also come with one. Hopefully we don't come with the same story. Maybe during the week on WhatsApp you can post the title of your story so as everybody they know whose story they are talking about, they're going to present. So I'm confused now. ऐसा नहीं कि आप वो story बताएंगे वो भी same story. इसलिए आप post कर लेना WhatsApp group में कौन कौन सा story आप अगले हफ्ते के लिए आप महाप्रभु के बचपन वाला लीलाएं के बारे में आप बताएंगे. ठीक है? और कोई प्रश्न है? Any you can send me in the chat box if you have any question. And so let me just check the chat box. There's no question. Okay, thank you, Imashu, for coming. Kushi, yes, thank you. So we'll see you all next week with your stories, and I hope and please post it on WhatsApp so as I know who is doing which story. Okay. Hare Krishna, everyone. Radhe Radhe. Radhe Radhe, Hare Krishna Prabhuji. Hare Bol, Imashu. Radhe Hare Krishna, Radhe. Prabhuji.